Hello mermaids, welcome to my channel. Thank you for clicking on this video. My name is Gini. Actually, welcome to my bathroom. Today in this video, I am going to apply ginger oil all over my hair and going to leave that overnight just to see what difference that will going to make. Now you might be thinking, why ginger oil? Actually, they have so many benefits. Number one, it helps to remove the dandruff. So अगर आपके बालों में dandruff है या heavy dandruff है, I will highly recommend to use ginger oil at least once in a week. Also second जो बहुत ज़्यादा important है, it helps to detox your scalp as well. So month में एक बार आप ginger oil जरूर use करें अगर आपको dandruff नहीं है तो, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपके scalp को detox करता है, which is actually very important for your scalp. Now the third, which is very important, that is it helps to slow the rate of your hair loss. So if you are facing hair loss problem, I will highly recommend to use this ginger oil. So yes, this is my 5th day here. So here is my ginger oil, and if you don't know how to make ginger oil at home, I have a video. मैंने previously अपने channel पे वो video upload किया, that is 15 seconds short video. I will highly recommend to check that video. So I will put the link in the description box below, as well as you will get the iCard over here. So if you are facing hair fall problem, I will highly recommend to follow all those steps. It's very easy to make. I always like to apply oil on my scalp with the help of cotton because that is little easy for me. Also, if you don't like the smell of ginger, then I will highly recommend to use 1 drop of essential oil in it. So it will cover the smell of ginger. I like the smell of ginger, like I don't have any problem with the smell, so that's why I use directly. But if you don't like the smell, I will highly recommend to use just 1 tiny drop of essential oil, because too much essential oil is also not good for your scalp. So just 1 drop of essential oil. I will put some good essential oil in the description box below, which will going to help in your hair fall if you are facing hair fall and you are using ginger oil. Also, I will put some good essential oil for your dandruff. So if you are facing dandruff and if you want to try ginger oil, put those essential oils. If you are facing hair fall problem, put the other, like I will mention which one is for dandruff, which one is for hair fall. While applying the oil, I will highly recommend to massage your scalp as well, and please be noted, don't use your fingernail, just to use your fingertip to massage your scalp very well. Also, I am using this shower cap because it will going to trap all the heat from the oil, and that means deep penetration. Hello mermaid, this is next morning and I have washed my hair with a detox shampoo or clarifying shampoo. I always try to use detox shampoo once in a month or sometimes 1 in 2 months, because it actually cleans your scalp very well. So if you have dandruff, I will highly recommend to wash your hair at least once in a week with a detox shampoo. It will just clean your scalp very well. The description box below मैं आपको कुछ बहुत अच्छे डिटॉक्स स्लैश क्लैरिफाइंग शैम्पूज मेंशन कर दूंगी. सो प्लीज अगर आपको वो चेकआउट करना है या यूज करना है, देन आई विल हाईली रिकमेंड दोस. So yeah, this is my hair. So first thing which I have noticed, scalp बिल्कुल clean और fresh हो जाती है, and वो feeling जो रहती है बहुत मुझे अच्छी लगती है. एंड मेरे बाल एक्चुअल में अभी मैं कहूँगी 90% जो है वो ड्राई हो चुके हैं, 10% स्टिल इनको एयर ड्राई होना है. सो मेरे जो लेंथ है वो मुझे थोड़ी सी ऑयली लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कंडीशनर यूज किया है उसने प्रॉपरली ऑयल जो है वो रिमूव नहीं किया है मेरे हेयर लेंथ से. मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्कैल्प जो है वो तो मुझे लाइक अच्छी लग रही है, बट मुझे लेंथ जो है थोड़ी सी मुझे ऑयली लग रही है. आई डोंट नो कि आपको भी ऐसा लग रहा है. मैं हल्का सा खड़े होके आपको दिखाती हूँ कि थोड़ा सा ऑयलीनेस है, या मेरे बाल अभी फुल्ली ड्राई नहीं हुए हैं इस वजह से ऐसा लग रहा हो. बट या दिस इज माई हेयर लेंथ. ओवरनाइट नहीं करना है. मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ता होगा. तो आप अगर हेयर वॉश के 1 आवर पहले भी अगर आप जिंजर ऑयल लगा लेते हैं, एंड यस आई विल हाईली रिकमेंड कि जिंजर ऑयल लगाने के बाद अगर आप शावर कैप
को पहन लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन भी करता है। देन आई विल हाईली रिकमेंड कि आप शैम्पू के 1 आवर पहले ऑयलिंग करें एंड देन फिर शैम्पू कर लें। आई डोंट थिंक सो कि ओवरनाइट करने की ज़रूरत है। मैं बस देख रही थी कि ओवरनाइट से कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता है और कि नहीं, बट मैंने बहुत बार जिंजर ऑयल यूज़ करे हैं, बट मुझे कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस चेंज नहीं लग रहा है। सो येस, आई विल रिकमेंड, आपको जिंजर ऑयल यूज़ करना है तो शैम्पू के 1 घंटे पहले अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए एंड देन आप हेयर वॉश कर लीजिए। सो दिस इज माई हेयर। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर आपको कोई रिकमेंडेशन है प्लीज लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ आई एम गोइंग टू सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड कीप ग्रोइंग योर हेयर। You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh,